वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है डे 2 में। आज कुछ लोग नए जुड़े होंगे, उन सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आप सभी बहुत प्रतिभावान लोग हैं जो डिजिटल क्रांति में कार्य कर रहे हैं। हम आज देखेंगे कि हम कौन-कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ करके और इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। So definitely we are going to learn new applications today and I'm going to show you the agenda for the day. आज हम क्या-क्या यूज़ करेंगे उन सब का मैं अभी एजेंडा आपके साथ में शेयर करूँगी। आप सभी से सविनय निवेदन है कि कृपया अपना इंट्रोडक्शन चैट विंडो में आप लिखें और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है डे 1 से रिलेटेड आप वो भी चैट विंडो में लिख सकते हैं। हमने डे 1 में देखा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस ऑन द वेब हम किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हमने कल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वन नोट इन सभी एप्लीकेशंस के बारे में देखा कि हम उसको क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है और हम शेयर कर सकते हैं और हम जब शेयर करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को, उसमें मल्टीपल पीपल काम कर सकते हैं। उससे भी इफेक्टिवली आप काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आज हम डे 2 में क्या-क्या सीखेंगे? तो एजेंडा डे 2 का आपके सामने है। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टोर एंड शेयर यूजिंग वन ड्राइव। वन ड्राइव के थ्रू हम कैसे साझा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ में। हब फॉर टीम वर्क, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। टीम वर्क के लिए ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम सभी सहभागियों के साथ जुड़ सकते हैं। हम अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, हम मीटिंग्स कर सकते हैं और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ में। तो हम आज सीखेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन। We are also going to learn brainstorming activities using whiteboard. व्हाइट बोर्ड का मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे ख्यालों में आता है कि व्हाइट बोर्ड इज लाइक सिमिलर टू ब्लैक बोर्ड, राइट। जैसे हम क्लास में ब्लैक बोर्ड देखते हैं उस तरह से आपका व्हाइट बोर्ड भी होता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्टिविटीज लिख सकते हैं, स्केड्यूल बता सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम जो चीज़ हम ड्रॉ करके कॉपी में करते हैं या अपनी किसी डिजिटल नोटबुक में कर सकते हैं, वही चीज़ हम वहाँ पे व्हाइट बोर्ड में कर सकते हैं। एंड मोर ओवर व्हाइट बोर्ड अलाउ करता है कि वी कैन कोलेबोरेट विद आवर टीम मेंबर्स आल्सो। सो जब हम कोलेबोरेशन की बात करते हैं तो हम इफेक्टिव हो जाते हैं अपने कामों में और बहुत अच्छी तरह से उस काम को कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं कामों को। हम माइक्रोसॉफ्ट प्लानर को भी आज देखेंगे किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट प्लानर को यूज करेंगे फॉर द टास्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम किस तरह से अपने कार्य को प्रतिबंधित करेंगे प्लानर का उपयोग करके। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स यूजिंग पावर बीआई। हम पावर बीआई का उपयोग करके डैशबोर्ड्स बनाएंगे। जैसे आपका अगर एक्सेल में डेटा है तो उसका कितनी पावरफुली डैशबोर्ड बन सकता है पावर बीआई के थ्रू। सो पावर बीआई इज बेसिकली अ विजुअलाइजेशन टूल थ्रू विच वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स। And we can also see how to use Microsoft Forms to collect data in the real time, because जब हम रियल टाइम डेटा की बात करते हैं तो हम वास्तविक में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। हमें किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि डेटा आएगा और हम उस पर फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। आप जैसे जैसे लोग भरते जाएंगे आपके आपके फॉर्म को, वैसे वैसे आपके पास में डेटा रिसीव होता जाएगा। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इफेक्टिव टूल। आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं, आप सर्वेज कलेक्ट कर सकते हैं, आप क्विजेस बना सकते हैं। क्विजेस बनाने के बाद में आप स्टूडेंट्स को आप आपको चेकिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली चेकिंग हो जाएगी पेपर्स की अगर आप क्विजेस बना के देते हैं उन्हें तो। और ऑटोमेटिकली आपके स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि कितने मार्क्स उनके आए हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में और हम इन सब एप्लीकेशंस का ब्यूटीफुली यूसेज देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को।
ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, नाउ वन ड्राइव फॉर बिजनेस। जब हम वन ड्राइव फॉर बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है कि हम वन ड्राइव बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी वन ड्राइव है। वो ये वन ड्राइव फॉर बिजनेस क्या है? सो वन ड्राइव फॉर बिजनेस आपका आपको बहुत ज्यादा स्पेस देता है, राइट? स्पेस के अलावा आप अपलोड कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज आपको मिलता है, क्लाउड पे डेटा सेव कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड पे डेटा सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं कहीं से भी, अपने डिवाइस के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं, आप फाइल्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी फाइल एक क्लाउड पे है और आपको उसको अपडेट करना है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। हमने कल जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन की थी, एक्सेल किया था, उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि हम अगर ऑटो सेव फंक्शनैलिटी को टर्न ऑन करते हैं तो auto save will automatically save your files, and if you are saving it on the cloud, so cloud will automatically take care of your data, right? Cloud आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव करता है और आपके डेटा को आपको प्रोवाइड करता है जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा की। आप इजीली फाइल्स शेयर कर सकते हैं। जब आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं तो उसके साथ में आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, आप एडिटिंग राइट्स दे सकते हैं, आप व्यूइंग राइट्स दे सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। देयर इज वन मोर थिंग इन दिस स्लाइड, इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इंटीग्रेशन विद ईमेल, ये सारी चीजें कैसे होंगी? सो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम टीम्स जब यूज करेंगे, विच इज हब फॉर द टीम वर्क, उस टाइम पे हम कैसे वन ड्राइव को वहां पे यूज करेंगे, राइट? तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड देन सेट अप योर मोबाइल डिवाइस, बिकॉज वी ऑलवेज कैरी अवर मोबाइल डिवाइसेस, राइट? हमारे पास में स्मार्टफोन्स होते हैं। आपका एंड्रॉइड फोन हो गया, आपका आईफोन हो गया, तो हम एंड्रॉइड और आईफोन में भी इसका यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। हमारे पास अगर फाइल्स है तो हम क्विकली शेयर कर सकते हैं। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हम तुरंत किसी भी फाइल को जो हमारी क्लाउड पे अवेलेबल है उसको हम अपने टीम मेंबर के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को अपडेट करना है, कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो हम उस फाइल को तुरंत इंसर्ट भी कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स, वी कैन क्लिक अ पिक्चर ऑल्सो फ्रॉम अवर मोबाइल, राइट? तो हमारे पास जब हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं तो हमारे पास में वो फैसिलिटी भी होती है कि हम पिक्चर क्लिक करके उसका उसको भी शेयर कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स ओवर हियर। Okay, now, mhm, now we are going to look at OneDrive कि OneDrive कैसे दिखता है आपका, क्या-क्या चीजें हैं उसमें, and what all things are there which you can actually check, right? So let's proceed further. Okay. Now you can get started with OneDrive at work, right? What you can do, you can use it from anywhere with any device. आपका चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई सिस्टम हो। हम सबसे पहले ऐप लॉन्चर पे जाते हैं और वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। वन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। आपको एक तरह का प्रीव्यू दिखाई देगा। जब हम अपलोड करते हैं तो वो पूछता है, आपको एक लोकेशन देगा, आपको कौन सी फाइल्स सेलेक्ट करनी है। आई कैन सेलेक्ट द फाइल्स एंड आई कैन अपलोड द फाइल्स। अपलोड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फाइल्स को, राइट? आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उससे भी आपकी सारी फाइल्स क्लाउड पे चली जाती है। तो किस तरह से आप करेंगे? इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप। जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको वो सारी की सारी फाइल्स, इट विल टेक्स टाइम। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में टॉप राइट कॉर्नर में इट इज शोइंग यू अपलोडिंग 19 आइटम्स। इसका मतलब मैंने कुछ 19 फाइल्स सेलेक्ट की है और उनको मैंने अपलोड किया है, राइट? एंड इट विल टेक few minutes, probably 2 minutes or 3 minutes, कुछ मिनट वो लेगा डिपेंडिंग अपॉन फाइल्स कि आप कितनी फाइल्स अपलोड कर रहे हैं। एंड देन इट विल, वंस इट विल अपलोड योर फाइल्स onto the OneDrive, onto the cloud storage, it will give it to you. ये आपके फाइल्स आपके ही पास में रहेंगी until and unless you are not going to share it. जैसे ही आपकी फाइल्स अपलोड हो जाती है, आपको ये दिखाई देंगे कि इट इज प्राइवेट मोड, राइट? प्राइवेट मीन्स इट इज ओनली विद यू। आपने अभी तक किसी के साथ में शेयर नहीं की है। प्राइवेट मीन्स आपके पास ही है ये फाइल्स,
राइट, जैसे आप शेयर करते हैं आपके फाइल का स्टेटस चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास में यहाँ पे 4-5 कॉलम्स अभी है विजिबल, राइट। फर्स्ट कॉलम बेसिकली आपका नाम बताता है, आपके फाइल का नाम कि कौन सी फाइल आपकी अपलोड हुई है क्लाउड स्टोरेज पे। आपने कब उसको मॉडिफाई किया, जैसे अभी अ फ्यू सेकंड्स एगो लिखा है, इसका मतलब अभी हमने अपलोड की है फाइल्स वन ड्राइव पे, ठीक है। उसके बाद में आपका है मॉडिफाइड बाय, किसने मॉडिफाई किया है, अगर आप ही ने किया है तो आपका नाम आएगा, अगर किसी और ने किया है तो उसका भी नाम आएगा यहाँ पे, अगर आपने फाइल्स शेयर की है तो। अगर फाइल्स शेयर की है तो ऑफ कोर्स शेयरिंग वाले कॉलम में शेयर्ड भी लिखा हुआ आएगा, राइट। और उसके अलावा वो आपको फाइल का साइज दिखाता है। तो दिस प्रीव्यू यू आर ऑलरेडी अवेयर विद, क्योंकि जब आप सिस्टम में काम करते हैं, आप एक्सप्लोरर में जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में, तो हमें कुछ इस तरह का ही प्रीव्यू दिखाई देता है फाइल एक्सप्लोरर में भी, कि हमारी फाइल्स का नेम ये है, कब मॉडिफाई हुई है, राइट, कब अपडेट हुई है, और क्या फाइल का साइज है। Now, if you want to share the file, you have to select that file. Once you select that file, you just need to open it and you can do the changes. अब आपने सेलेक्ट किया, जो आपका सेलेक्टेड आइकन है यहाँ पे शेयर बटन, राइट। इस शेयर बटन पे क्लिक करते ही एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक एनीवन विद द लिंक। एनीवन विद द लिंक मीन्स आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस फाइल को। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बेसिकली कि आपको ये फाइल कैसे शेयर करनी है। नाउ वंस यू सेलेक्ट एनीवन विद द लिंक, देन यू कैन सेलेक्ट other settings. Other settings में it will ask you to give the editing rights. So let's say मुझे editing rights देने हैं अपने टीम मेंबर को, तो मैं यहाँ पे allow editing पे क्लिक करूंगी। ओके, उसके बाद में मैंने अलाउ एडिटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद में मैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एक एक्सपायरेशन डेट सेट करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट का मतलब है कि हम उस फाइल को सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या जो भी आपका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के लिए उस स्पेसिफिक मेंबर के साथ में शेयर कर रहे हैं, राइट। आफ्टर दैट ड्यूरेशन द पर्सन whom you are sharing with is not able to view your file. दैट इज द मोटो बिहाइंड इट। एक्सपायरेशन का मतलब हमारी हमारी फाइल एक्सपायर नहीं होगी, राइट। हमारा लिंक एक्सपायर हो जाएगा जिसके साथ में हमने वो फाइल शेयर की है। So you can set the date, like it will expire on, and then click on the apply button. That's it. You can copy the link or you can write the email ID also of the name of the person with whom you want to share and just click on the send button. जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, आपने आप चूंकि आपने यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी टाइप किया हुआ है, तो वो आपकी ईमेल भेजेगा उस पर्सन को, राइट। आपने कॉपी लिंक पर भी क्लिक किया है, तो कॉपी करके आप उसको शेयर कैसे भी कर सकते हैं। अब आप उसको शेयर मेल के थ्रू कर सकते हैं, आप उसको शेयर किसी और मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। नाउ जैसे ही आपकी फाइल चली जाएगी, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज आता है दैट लिंक सेंट। Now, what else? Now there are three dots available with every file. ये जो three dots है, it will give you more options. It will give you another menu, right? अब जैसे ही यहाँ पे three options पे मैंने click किया, what it will give you? It will show you different options like if you want to open it, if you want to take a preview, कैसे दिख रही है फाइल, if you want to share it, if you want to copy the link, आप यहाँ से भी copy link कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी लिंक करेंगे, आपके पास में सेम डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे हमने अभी डायलॉग बॉक्स देखा था। यू कैन गो टू द मैनेज एक्सेस ऑल्सो, राइट। मैनेज एक्सेस कब काम आएगा आपका, जब आपने ऑलरेडी किसी के साथ में फाइल शेयर की हुई है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में शेयर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने ये फाइल ऑलरेडी किसी के साथ में शेयर की हुई है, राइट। नाउ आई वांट टू मैनेज एक्सेस, आई वांट टू यूज दिस ऑप्शन मैनेज एक्सेस। मैनेज एक्सेस का मतलब है कि नाउ यू can change the expiration date or you can stop sharing. So whatever you want, you can do it from this place. So I can click on manage access, right? And then manage access dialog box will come.
And then if you want to stop sharing that particular item, you can simply click on the stop sharing button. That's it. इससे क्या होगा कि जो आपने फाइल शेयर की है किसी के साथ में, वो ऑटोमेटिकली वो जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगी, right? So this will be deleted all the links which is giving access to this item and remove all people with the direct access except for the owners. आप ओनर है, आपके पास ये फाइल है, आपके पास राइट्स रहेंगे उसको देखने के लिए, लेकिन जिसके साथ में आपने शेयर की है उसके साथ राइट्स नहीं रहेंगे, राइट? Then you can, if your file is on cloud, then you can use it from anywhere, be it your laptop, be it your tablet, or be it your mobile device. So this is the beauty of OneDrive. सो वन ड्राइव के साथ में हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। हम हमें फाइल्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट? अपने सिस्टम में, बिकॉज सिस्टम में जब बहुत सारी फाइल्स हो जाती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें थोड़ा टाइम लगता है किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए। अगर हमें फाइल नहीं मिलती है तो प्रोबेबली वी कैन गो एंड सर्च थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंशंस आल्सो। बट वन ड्राइव में बेनिफिट आपका ये है कि the first benefit is it is not going to take your system space, आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस नहीं लेता है। दूसरी चीज, आपका क्लाउड स्टोरेज पे है, ये क्लाउड पे अवेलेबल है जो जगह, वहां पे आपने डेटा सेव किया है, तो आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी, इसका मतलब आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए और आप उसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं अपने कुलीग्स के साथ में। अगर आपने फाइल्स में कुछ चेंजेस किए हैं, लेट्स से मैंने अपने पीसी पे कुछ चेंजेस किए हैं और वो मेरी फाइल क्लाउड पे है, तो सेम चीज आप जो आपने जो भी चीजें चेंजेस की होंगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी की सारी आपको रिफ्लेक्ट होंगी आपके मोबाइल में भी और आपके टैबलेट में भी, ये आपकी किसी और डिवाइस में जहाँ पे आपने लॉग इन करके अपनी फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सिस्टम पे अपडेट की है फाइल तो मुझे अपने दूसरे डिवाइस पे अपडेट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे डेटा को कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इफ इट इज ऑन वन ड्राइव एंड इफ यू आर अपडेटिंग योर फाइल, it will reflect same on the other devices as well. So this is the beauty of OneDrive. Now I am moving next. Okay. Now work with your files. जैसे कि मैंने आपको बताया कि OneDrive is a place wherein you can save your files. It is the cloud service actually that will connect you to your files. ठीक है, जैसे हमें हमने अपलोड की थी फाइल्स, हमने 19 फाइल्स अपलोड की थी वन ड्राइव पे, राइट? और जैसे हमने वन ड्राइव पे अपलोड की थी, हम उसको यूज कर सकते हैं। सो इट विल अलाउ यू टू स्टोर, इट विल अलाउ यू टू प्रोटेक्ट योर फाइल्स, इट विल अलाउ यू टू शेयर देम विद अदर्स, and of course it will allow you to get to them from anywhere of all your devices, आप चाहे वो कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं। Now when you use OneDrive with an account which is provided by your companies or school, it is sometimes called OneDrive for business. Now probably you may have a question कि मैम कितना स्पेस होता है यहाँ पे? हमारे जीमेल में तो सिर्फ 15 GB ही स्पेस है, because that is your personal drive. So this OneDrive will give you 1 TB of space, and 1 TB is a huge space which you will get. Right now you can use this OneDrive application on your mobile devices also. आप अपने एंड्रॉइड पर भी यूज कर सकते हैं और आप आईफोन्स पर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप मोबाइल पे यूज करेंगे, बी इट योर एंड्रॉइड डिवाइस और योर आईफोन डिवाइसेस, राइट? ओके, कैसे उसको आप यूज करेंगे उससे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, राइट? सो आई विल शो यू दैट पार्ट आल्सो. Okay, now this is your OneDrive, which is available on Android devices. What you need to do, if it is not there, you just need to click on the Play Store, right? You can set up your Android on your mobile or tablet. Click on the App Store button. It will open up. You just need to write down OneDrive app, and it is going to download the OneDrive app. इनिशियली इंस्टॉल दिखाता है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है आपको वो ओपन दिखाएगा।
राइट। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आती है वेलकम टू वन ड्राइव, जैसे कि बाकी सारे एप्लीकेशंस में आती है जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइसेस पे। So now it will ask you to sign in. So you can sign in and use your email for your OneDrive. Now what else? Once you click on the sign in button, you need to enter your ID and of course password. आपके जैसे अपने अकाउंट यहाँ पे आपका विजिबल है, आप अगर आपके पास में एक से ज्यादा अकाउंट्स है, यू कैन ऐड मोर अकाउंट्स ऑल्सो। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द प्लस आइकन, राइट, which is available on the top corner, and click on the plus icon and enter the email ID. That's it. यहाँ पे आपने enter किया अपनी email ID. Again, it will ask you password and you need to enter the. It will take you to the home page of OneDrive. नाउ इट विल शो यू फाइल्स। यहाँ पे आपको फाइल्स दिखाएगा बहुत सारी, राइट। आपको दिखा देगा कि कितने सारे अकाउंट्स एडेड है। नाउ यू कैन ओपन योर वन ड्राइव फाइल फ्रॉम एनी एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुई है वन ड्राइव की फाइल। वर्क वेयर यू वांट, एक्चुअली इफ यू वांट टू एडिट एनीवेयर यू कैन सिंपली do the changes. And again there is a share button also, wherein you can click on the share button and you can share that file also. So I think it is a good way to increase the productivity, to use effectively, to work quickly, to complete your work, because many of the times यही struggle रहता है कि हमें फाइल पे अपडेट करके उसको शेयर करना है, उसको फिर मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। तो definitely we need not to create multiple copies also, because if you are creating a single file you can simply update that file only, and the benefit is hundreds of people can work on that file, irrespective of their location. आप अपने कुलीग के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं और वो उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं। Okay, let me take a pause here and let me check if any questions are there. Okay, so I also would like to show you how you can check it on your iPhones. Okay, so on iOS and Android devices, you can access your files from anywhere. Right, you can simply click on OneDrive. The scenario is same for the download. You can go to the respective Play Store and just click on the application or give the name of the application and just click on the install button. Once it is installed on the devices, then you can see, you can select a file, you can open it, you can view it, like you can just do the changes also. अगर आपको edit करना है तो you can simply tap the icon to edit the file, that's it. It will allow you to do the changes. You can go back, you can simply click on three dots, right, and it will give you more actions. Now you can see there are many options which are already available on the screen, right? Once you click on these three dots, it will give you more options on your mobile devices also, like on your iPhone, and it will give you, you can share your file, you can move your file, you can save your file, you can delete, you can rename, and you can keep offline also. So definitely if you want to share, if you want to move, you can definitely do all these things, and you can keep offline by just downloading it. Now you can click on the share button and again it will show you how you want to share it, because आप अभी मोबाइल में काम कर रहे हैं, right? So now here you can see it will ask you whether you want to give the editing rights when sharing this particular document. So you can choose the way you want to share it. Now you can choose the way, like you can copy the link, you can even invite people, you can send the files, or you can send it through the Outlook also. There are different methods available. Now, business customers can also set sharing permissions, because that is sometimes very much required when the file is confidential and you wanted to put some passwords or you wanted to give the link, but protected link should be there. So you can make the protected link by just keeping a password. So again, the process is same. You can simply select anyone with the link, allow editing, and click on the apply button, and
in fact, you can see the recent files, you can see the shared files, and of course, you can even scan docs and whiteboards. That is the beauty, because हम mobile पे काम कर रहे हैं, right? So definitely we can click a picture also, and we can quickly send it to the customer, or we can send it to the team member or student, anyone with whom you are interacting with. So सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारा ये है कि जब हम मोबाइल के साथ काम करते हैं तो हमें और इजी हो जाता है काम करना, right? And then you can simply scan the documents. Like if I have the document, I can simply click on this icon and I can click a picture like this way, right? And simply I can click a picture and I can save it and I can share it. So you can simply click on a plus icon also, and it will give you more options, like if you want to take a photo, if you want to scan, or if you want to create a folder. आप अलग अलग folder भी बना सकते हैं अगर आपका data specific to the customer है या specific to the business requirements है. आप उसके accordingly यहाँ पे folders भी बना सकते हैं, because folders को बनाने के साथ में आप उसको segregate कर रहे हैं data को, right? तो उससे आपको easy रहेगा कि you can quickly find out the data कि okay, this data is from the month of January, or this data is from the month of February. So it will, it will make you easy to easily find out the data actually. Now, apart from that, we do have upload option over here. अगर हमारे पास में हमने कोई मोबाइल पे कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, we can quickly upload it. In fact, we can also create our own documents. We can create a Word document, we can create a PowerPoint presentation, we can create an Excel sheet. So यहाँ पे हमें ये भी options provide करता है कि हम directly OneDrive से भी अपनी documents को बना सकते हैं, right? So these are the things which are available inside your OneDrive, and once you create it, you can then share it. And again, you can select the left corner to change the accounts also. You can simply select, if you want to switch accounts, you can simply go to another account. That's it. So this is how a OneDrive will ease your life. When with the help of OneDrive, you can quickly do the things. You can quickly share the files with your colleagues and with your teammates. So I believe that OneDrive will really help you out, like for the sharing files, and the another one is the cloud storage, because that is very important nowadays. क्लाउड पे फाइल्स रहेंगी तो आपके सिस्टम का स्पेस वो नहीं लेता है, राइट? आपको क्लाउड स्पेस दे रहा है एक, कि आप अपनी फाइल्स को वहां पे रखें और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं. Okay, so let me take a pause. Okay, so this is the assessment time. So probably I have just one question. What is the storage you will get in your OneDrive? Okay, now we can see how Microsoft Teams will really help us. So Microsoft Teams is the hub for the teamwork. आप सभी ने Microsoft Teams का नाम सुना होगा, right? There are other applications also जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आती है. So Microsoft Teams में ऐसा क्या है? So why I'm saying कि it is a hub for the teamwork. So Microsoft Teams is actually a platform for the communication, for the collaboration. In fact, you can hold a conversation with your colleagues, right? You can even share the content with your colleagues. You can schedule a meeting, you can use the whiteboard, you can change the status, you can do so many things into this. जैसा कि कल हमने देखा था कि inaugural session में there were so many speakers, and they were talking about that हम टीम्स में जब हम होते हैं तो हम लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, उनके साथ में मीटिंग्स कर सकते हैं, उनके साथ में फाइल शेयर कर सकते हैं, राइट? व्हाट इफ अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करें तो हमें सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, राइट? जहाँ पे आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं, राइट? अगर आप लेट्स से इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो प्रोबेबली यू आर कैरिंग कॉपीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट? आपके पास अलग अलग नोटबुक्स होंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की. सो इन द सेम वे, इफ यू आर लाइक इफ यू आर अ टीचर, प्रोबेबली इफ यू आर अ टीचर, देन यू हैव अ क्लास, राइट? अगर आप क्लास में क्लास टीचर है तो प्रोबेबली यू विल टीच ओनली वन सब्जेक्ट, एंड द रेस्ट ऑफ द टीचर्स विल कम टू योर क्लास एंड दे आर गोइंग टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ऐसा ही होता है
है, राइट? कि आप क्लास टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, बाकी के सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपकी क्लास में आके आपके क्लास के बच्चों को पढ़ा के जाते हैं, right? What if we can create an environment in Microsoft Teams wherein we all will meet together in a class, and as a class teacher I should know what is going on into the class. So what I can do with the help of Microsoft Teams, I can create team, I can add all the students in my team, I can add all the teachers in my team, right? And I will also create different channels, so we can work with the channels also. Channels are nothing but it is specific to the subject in your class, in your team. एंड अगर मैं टीम की बात करती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली टीम इज, सो टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्चुअली. सो यहाँ पर भी हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी क्लास होगी, आपकी क्लास के बच्चे होंगे, आपके साथ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे जो आपकी क्लास को पढ़ाते हैं वो आपके साथ जुड़े होंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ में. एंड यू कैन क्रिएट अ चैनल, यू कैन क्रिएट डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर देम, डिफरेंट चैनल्स फॉर देम, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. आई विल शो यू कि किस तरह से वो प्रीव्यू दिखता है, राइट? एंड हर सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो अपने चैनल में जाएगा, अपने चैनल में शेड्यूल करेगा मीटिंग्स को, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइल्स को अपलोड करेगा. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू दिस. वी कैन आल्सो डू द इंटीग्रेशन पार्ट of different applications into Microsoft Teams. So Microsoft Teams is a very a fantastic application through which you can learn so many things. In fact, you can see we do have activity button. ये bell icon है exactly. ये हमें notification भेजता है जब भी कोई हमें मैसेज भेजता है, या हमें Teams के थ्रू किसी ने कॉल किया, राइट? तो भी नोटिफिकेशन यहीं पे आता है. अगर हमने हमारे कुछ अनरीड मैसेजेस है, राइट, तो अनरीड मैसेजेस का भी नोटिफिकेशन यहीं पे आता है. एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. हम किसी के साथ चैट भी कर सकते हैं, यहाँ पे वन टू वन चैट भी कर सकते हैं, वन टू मेनी चैट भी कर सकते हैं. वन टू मेनी का मतलब है कि मैं ग्रुप बना के चैट कर सकती हूँ, राइट? आप अपनी चैट को चैट में अगर किसी के साथ आप इन्वॉल्व है तो आप उस चैट को कंटिन्यू रख सकते हैं और बाकी का काम भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डू हैव द पॉप आउट मेन्यू ऑप्शन विच इज अवेलेबल. वी कैन आई कैन शो यू टीम्स का यूज केसेस, कैसे आप डे टू डे लाइफ में टीम्स का यूज इफेक्टिवली कर सकते हैं, जो आपके काम को बहुत इजी बना देता है, राइट? आई कैन शो यू कि जैसे अभी हमने देखा वन ड्राइव कैसे हमने यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, उसी तरह से आप यहाँ पर भी टीम्स का भी यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, राइट? आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं. देर आर सो मेनी स्लैश कमांड्स. अगेन किसी भी कमांड को यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी इजी. इट विल ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, राइट? हम मीटिंग्स कर सकते हैं, हम एक साथ लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हम लाइव मीटिंग्स कर सकते हैं. हम मीटिंग्स जब होती है उसके साथ में हम नोट्स लिख सकते हैं, ताकि हम मीटिंग के बाद में उस मिनट्स ऑफ मीटिंग को शेयर कर सकते हैं टीम मेंबर्स के साथ में, राइट? हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. आई होप सब लोग देख पा रहे हैं मुझे कि मैंने एक बैकग्राउंड लगा के रखा है, तो आई कैन चेंज द वर्चुअल बैकग्राउंड ऑल्सो, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन टू दिस. we have different advanced options over here. Now we can see what exactly Microsoft Teams is. So Microsoft Teams is basically hub for the teamwork, and which will allow you to collaborate in Office 365, which integrates people, content, and the tools that your team needs to be more engaged and effective. Now, a team brings everything together in a shared workspace, right? Where you can chat, you can meet, you can share files, and you can even work with the business applications. जब हम business applications की बात करते हैं, तो probably you can use different applications based on the requirement. अगर आपका education का profile है, तो you can connect a search engine, you can connect different tools like Mentimeter, Wakelet, Flipgrid, right? There are so many beautiful tools that will help you to interact with your students, right? Teams के साथ में जब आप काम करेंगे, we do have insights available for our class. Insights का मतलब है कि क्लास में क्या स्टेटस है, क्लास का कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, कितने बच्चों को आपने असाइनमेंट वापस कर दिया है, क्या स्टेटस है. इनफैक्ट Teams has integrated um, जो आप बात करते हैं कि सोशल इमोशनल लर्निंग, राइट? इट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, सो हाउ दे आर फीलिंग, राइट? सो सोशल इमोशनल लर्निंग का पूरा एक इसमें इंटीग्रेट है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, जिसमें कि हम
कि how our students are feeling, what are their reactions, right? So we can integrate so many things, and it is really beautiful. ओके नाउ बेस्ट पार्ट इज जब आपके पास अटेंडेंस की बात आती है या असाइनमेंट्स की बात आती है तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू क्रिएट द रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट बनाना सबसे ज्यादा टफ होता है. नाउ टीम्स विल अलाउ यू टू fetch those reports also into Microsoft Excel. आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली सिंपल आपको चेक करना है अटेंडेंस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आपको सिंपल जैसे ही आपके इनसाइट्स में रिपोर्ट आती है आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड करनी है रिपोर्ट, दैट्स इट. राइट, सो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, एंड वंस यू हैव द डेटा इन एक्सेल डेफिनेटली यू कैन क्रिएट चार्ट्स. Right, so there are such good things available inside Microsoft Teams. It will allow you to work together. It is very much secure, right? And it will customize your own workspace. आप अपने workspace को customize कर सकते हैं अपने accordingly. Now, what else? Now this is the interface of Microsoft Teams. Let's get into the application and see how it looks like. So team is basically a group of people, as I have stated. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारी टीम्स बनी हुई हैं, राइट? और ये जो है ये सारी जो है ये सारे चैनल्स है. इसका मतलब है कि कुछ प्रोजेक्ट टीम है जिसमें इंजीनियरिंग एक चैनल है, मैन्युफैक्चरिंग एक चैनल है, एंड रिसर्च एक चैनल है, राइट? तो जब जो हम चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स इज बेसिकली अ फोकस्ड एरिया ऑफ वर्क और अ टॉपिक विद इन दैट टीम. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट चैनल्स, ताकि वो चैनल्स के लोग वहां पे आके वहां पे वो काम कर सकते हैं, राइट? एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स. सो यू कैन सी दिस इज अ वर्क स्पेस एरिया. वी कैन अपलोड फाइल्स, we can do the chat, we can compose a message also, and we can do so many things over here. We can even add the applications also. जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ओके, आई बिलीव कि आपके जो आसपास के स्कूल्स है वो टीम्स यूज कर रहे होंगे, राइट? सो टीम्स में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको भी मदद कर सकते हैं कि और अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि किस तरह से कोलेबोरेटिवली काम किया जा सके, किस तरह से फाइल शेयर की जा सकती है, किस तरह से कैलेंडर को मैनेज किया जा सकता है, राइट? किस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूसेज किस तरह से इफेक्टिवली कर सकते हैं. तो आप डेफिनेटली आप अपने आसपास के जितने भी एरियाज है वहां पर भी आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इट इज वेरी मच सिक्योर. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एक्चुअली सिक्योर, राइट? योर डेटा इज सिक्योर, बिकॉज डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो हमारे डेटा को भी सिक्योर करे, and data security is there, right? So you need not to worry about your data. Now as I have stated कि आप टीम्स को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है. So I'm just going to click on this icon and it will show you that you can use it in your desktop application, you can use it in your mobile, and even you can use it in the browser also. ब्राउजर का मतलब आपका जो एज ब्राउजर है या आपका फायरफॉक्स है, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको, राइट? आई कैन गो बैक. ओके, नाउ देयर आर सम यूज केसेस. अब यूज केसेस कैसे आप यूज करेंगे, प्रोबेबली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे टीम बनाएंगे, कैसे चैनल्स बनाएंगे. मैं अगर 10 लोगों के साथ में 10 अलग अलग कस्टमर के साथ में डील कर रहा हूँ तो क्या मैं 10 अलग अलग टीम्स बनाऊंगा, राइट? या फिर मैं एक ही डिपार्टमेंट में मेरे पास 50 लोग हैं तो क्या मैं 50 लोगों के लिए एक ही टीम बनाऊंगा, लेकिन 50 लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं. तो कैसे उन सब चीजों के लिए आप टीम्स और चैनल्स बनाएंगे? तो दीज आर द यूज केसेस. If you are from the marketing department, if you are from the event planning department, so you can create a team. Let's say if you are creating a team related to the marketing, and these are the potential channels which you can create, and you can add your team members, जहाँ पे आपके team members आपके respective channels में आके काम करेंगे, वहां पे फाइल अपलोड करेंगे, वहां पे कम्युनिकेशन करेंगे, वहां पे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू दिस. सो I will show you a day, how you can spend a day, right, with Microsoft Teams. So I'm going to show you that part also.
So these are the use cases which you can do. Like जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि let's say if you are a teacher right in a school, so you can create your class. मैंने अपनी एक class 10th बना ली है. Class 10th में मैंने अपने बच्चों को भी ऐड कर लिया है और मैंने 5 different teachers को भी ऐड किया है because they are coming in and they are teaching different subjects. Let's say English, math, science, physics, chemistry, like this. So वो teachers अपने channel में ही आएंगी. क्लास 10th में ही आएंगी वो, लेकिन क्लास 10th के फिजिक्स चैनल में आके फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो उस पर्टिकुलर चैनल में ही अपलोड करेंगी, राइट। जो भी मीटिंग्स होंगी वो उसी चैनल में स्केड्यूल करेंगी। जो भी कम्युनिकेशन होगा बच्चों के साथ में वो उसी चैनल में होगा। एंड एज ए क्लास टीचर आपको सारी चीजें पता चल रही है कि ठीक है मेरे क्लास में ये सारी चीजें चल रही है एंड द टीचर्स आर डूइंग दीज मेनी थिंग्स इन द क्लास, राइट। सो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। आपको किसी के साथ फॉलो अप नहीं करना पड़ रहा है, आपको किसी के साथ रिपोर्ट नहीं मांगनी पड़ रही है, बिकॉज एवरीवन यू कैन सी it is available on Microsoft Teams. So it is very effective, and you can increase the business opportunities by using this Microsoft Teams. And there are so many people who are using Microsoft Teams across the world. There are so many teachers, there are so many schools you are using it for the daily basis. जो अपने डेली के करिकुलम में भी वो लोग यूज कर रहे, डेली क्लासेस में भी वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज कर रहे हैं. Now, again, assessment time. Definitely, we will share some links with you in the chat window for the assessments, right? And I'll show you the preview also of Microsoft Teams once I'll jump into the demonstration part. Okay, now what's next? So now we have Microsoft Whiteboard, and Whiteboard is basically, Whiteboard से basically आपके जहन में आ रहा होगा कि Whiteboard is similar to the Blackboard, right? हम Blackboard पे chalk से लिखते हैं, but Whiteboard में हम marker से लिखते हैं. But what if Whiteboard is already available inside my device, right? So तब मैं कैसे करूँगी? तो we have different pens available over here. With Whiteboard you can do multiple things. You can see beautiful stickers are also there on the screen. यहाँ पे बहुत ही beautiful stickers है, बहुत सारी चीजें आपके पास available है, right? And now what you can do with the help of Microsoft Whiteboard, so you can see you and your team can collaborate where everyone can contribute. Can you see few cursors over here? Let me just pen down those. One is this, another one is this, and where is the third one? Yeah, and this is the third one. So you can see with the help of the cursor, there is a name also, right? And why there is a name? Because three people are working on this whiteboard. So, it will allow you to contribute on an infinite canvas as you are in the room together. क्योंकि जब हम एक रूम में बैठे होते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं, हम प्रोबेबली किसी नोटबुक पे नोट्स लिखते हैं, हम शेयर करते हैं अपने थॉट्स को. तो व्हाइट बोर्ड के साथ भी आप कर सकते हैं ये चीजें. एंड व्हाइट बोर्ड के साथ में द बेनिफिट इज कि इट इज देयर ऑन द क्लाउड ओनली, राइट. आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं इजीली. आपको हमेशा अपने नोटबुक्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा, या आपने जहाँ पे लिखा है उसको आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, राइट. यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं, राइट. आप डिफाइन कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट डिफाइन कर सकते हैं, कैसे फ्लो चार्ट काम कर रहा है, कैसे होना चाहिए प्रोसेस, आप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो व्हेन यू ओपन द न्यू व्हाइट बोर्ड यू विल नोटिस अ ब्रांड न्यू interface is there, which will give you blank white canvas, right. And you can start writing over here. यहाँ पे pens दिए हुए हैं at the top of it. You can simply take the pens and you can write down everything. If you want marker भी available है. If you want to rub anything you can take the eraser also. So these are the things which are already available. And basically on whiteboard, basically on Microsoft Whiteboard, it will it will allow you to collaborate with others basically. While we integrate this directly out of the box with Microsoft Teams, you can even use Whiteboard to seamlessly brainstorm on any platform. Whiteboard also enables you to like brainstorm, you can iterate, you can innovate, you can spark creative ideas with others
no matter what you are using and or where you are doing it from. You can share your ideas. So we can definitely use inks. Digital ink is an important part of the whiteboard, right? And we have 15 new pens and highlighter colors which are available to visualize your ideas. Because जब हम copy पर भी काम करते हैं तो probably some many of the times as a teacher we take red pen, we take green pen, we take blue pen, right? We take black pen also. So हम इन पेन्स के साथ में अलग अलग नोट डाउन करते हैं, कहीं पे हम स्टार लगाते हैं, कहीं पे हम सर्कल करते हैं। सो जस्ट टू रिमेम्बर कि ओके हमने ये पॉइंटर्स हमने लिखा तो है, लेकिन हमें ये पॉइंटर्स हमें याद रखने हैं, ये हमें इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। सो इन द सेम वे colors will give you more ideas to your life, right? That is why we do have different colors over here. We do have 15 new colors over here. You can draw a straight line, you can do anything, right? अगर straight line आप नहीं draw कर सकते, you can definitely there is a another thing. You can simply hold down shift key and then you can draw, so you will be able to create a straight line. There are different charts. आई मस्ट से कि चार्ट्स नहीं, यहाँ पे शेप्स है अवेलेबल जहाँ जो आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट, यू कैन क्रिएट डायग्राम्स। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, राइट, वी कैन शो देम with the help of the diagram. If we are showing them some stuff related to the chemistry, some equations, we can show them कि okay equations आप इस तरह से लिख सकते हैं and वो आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ में व्हाइट बोर्ड। द बेस्ट पार्ट इज कि हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वी नीड टू रब एवरीथिंग एंड देन if any teacher is coming up in your class, so definitely टीचर रब करेगी, टीचर विल स्टार्ट राइटिंग इट और उसमें बच्चों का काम आधा रह जाता है। उस केस में आप व्हाइट बोर्ड को ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं, आप अपना पूरे नोट्स वहां पे लिख के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? जिसमें बच्चों के पास भी वो चीजें रहेंगी जो आपने शेयर की है एंड इन द व्हाइट बोर्ड ओनली एंड इट विल बी विद यू बिकॉज यू आर द ओनर, राइट? आपने वो व्हाइट बोर्ड बनाया है तो आपके पास तो वो रहेगा ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आप फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं या आप सोलर सिस्टम के बारे में समझा रहे हैं या आप किसी प्रोसेस के बारे में समझा रहे हैं बच्चों को, आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज आई बिलीव कि जो इमेजेस होती है वो बहुत ही ब्राइट, वो बहुत ही इम्पैक्ट डालती है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर आप मुझे बोलेंगे कि ओके सोलर सिस्टम इस तरह से काम करता है, प्रोबेबली आई मे नॉट अंडरस्टैंड, बट अगर आप मुझे एक पिक्चर दिखा देंगे या कुछ उसका विजुअलाइजेशन दिखा देंगे विद द हेल्प ऑफ सम इमेजेस कि ओके अर्थ लुक्स लाइक दिस और मार्स लुक लाइक दिस और इसमें ऐसे काम हो रहा है, तो प्रोबेबली आई कैन अंडरस्टैंड more in a better way, right? Probably I can remember also. So photos and images का बहुत इफेक्ट होता है। हम you can see in the primary classes also हम बच्चों को images के थ्रू समझाते हैं कि this is what, so they can understand कि okay this particular image is known as, राइट? सो इमेजेस का बहुत इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। यूजर्स कैन डाउनलोड एंड इंसर्ट इमेजेस onto this canvas with the insert image feature we do have. we do have we do have beautiful templates which are available. आप बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो आपको इनोवेटिव आइडियाज को जॉट डाउन करने में हेल्प करेगा, जो आपके डिजाइन स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा, राइट? देयर आर सम मेनी ग्रुप प्रोजेक्ट्स we do have many more things. We do have sticky notes तो आपको दिख ही रहे हैं, बहुत सारे कलरफुल स्टिकी नोट्स है, हम चेंज कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स में लिख सकते हैं अपकमिंग गोल्स, अपडेट्स, लॉन्चेस, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? So as I have shown this to you कि आप templates use कर सकते हैं। We do have different templates available. We do have different shapes available. आप किसी भी shape को define कर सकते हैं, आप arrow कर सकते हैं, circle है, triangle है, बहुत सारी चीजें आप बना भी सकते हैं because आपके पास में different inks है available, right? So you can definitely use all these things. We do have reactions also. हमारे पास Teams में भी reactions है। अगर जब हम virtual meeting करते हैं तो we cannot share our reactions, like we cannot see each other, right? Many of the times, so what we can do, we can show the reactions. We do have different reactions available. If you want something, if you want to showcase your gestures, you can just click on the clap icon. We do have thumbs up icon, we do have smiley icon. So आप अपने gestures के through बता सकते हैं लोगों के कि how much you are happy with what it is available onto this particular whiteboard, right? Okay.
अपार्ट फ्रॉम दैट आप डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, आप लिंक भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लिंक को अगर आपको बच्चे को प्रोवाइड करना है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन यू नो आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ओके। Now, what's next? Yeah, we do have reactions, and we do have beautiful reactions. So, it is something which which you are expressing yourself. So, expression is a cornerstone of collaboration, right? Users can now provide lightweight contextual feedback with a set of fun or engaging and meaningful reactions. So, you can encourage participation from a broader range of participants. So with reactions, it is easy to engage, your students also, and your students will definitely love this. कि okay, we can tick mark this, we can put a question mark if अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, you can simply use the clap icon. You can अगर बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ किया है तो you can give a star also, because normally what we do with our primary classes, हम बच्चों को star देते हैं, right? Good or very good, or whatever, if you wanted to give, we can just make them in their notebooks, so it is good for them. They feel good when you are giving these kind of reactions. So these things are there into this. So now, with this, I can take a pause and I would like to see if any questions are there for me, and if not, you can try it by yourself. Okay. I'm going to show you how I can work with the whiteboard. So I'll share my screen with all of you. Okay. Let me stop sharing this. Yeah. So I would like to show you quickly. Okay. It is asking me to log in, so I can quickly log in. Mhm. Okay. So it is the authenticator which I need to, and do it when I'm logging in. So till the time I am just doing the login, I would again repeat whatever I have covered with you all. अभी हमने Microsoft OneDrive कवर किया था, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप OneDrive को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, राइट? आप क्विकली चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि चेंजेस सबको विजिबल होंगे। आपको मल्टीपल कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? And you can share it with your team. You can ask them to edit the file, right? And everything is there. So we do have beautiful OneDrive through which we can ease our work. And many of the times, when we are sharing the files ना, उनका फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम अटैच नहीं कर पाते. So the best way is we can quickly share the link, and the people will also get it through the link only. So this is the one thing which you can see if you are using OneDrive. Now whiteboard use जब हम करेंगे तो हम कोलेबोरेशन कर सकते हैं, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं लोगों के साथ में. हम डिस्टेंस लर्निंग का इजीली फैसिलिटेट करा सकते हैं बच्चों को, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू ट्रैवल. मतलब वो ट्रैवल नहीं कर पाते किसी किसी रीजंस के साथ में, तो आप उन बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू शेयर करके अपने व्हाइट बोर्ड के नोट्स, राइट? आप लेसन्स डिफाइन
डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, लाइक लेसन नंबर 1 में हमारी ये एक्टिविटीज है। जो भी एक्टिविटीज है आप उनको फन फिलिंग एक्टिविटीज बना सकते हैं व्हाइट बोर्ड का यूज करके, राइट। एंड मैक्सिमाइज आउटकम्स विद द इंक फैसिलिटी विच इज ऑलरेडी देयर। वी डू हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे कि हमने अभी बोला कि कलर्स रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, राइट। क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में आप बात करेंगे, डिफरेंट स्टिकी नोट्स दिखाएंगे, तो प्रोबेबली दे विल फील एक्साइटेड। सो डेफिनेटली यू कैन यूज स्टिकर्स, यू कैन यूज नोट्स, यू कैन इवन पुट द इमेजेस ऑल्सो। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप समझाना चाहते हैं, यू कैन यूज द images and you can beautifully talk about that image. So I think whiteboard is really wonderful thing. And of course teams के साथ में भी all are connected with Microsoft Teams, right? हम सभी Microsoft Teams के साथ में जुड़े हुए हैं अभी। हम लाइव मीटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स कैन कनेक्ट विद अस थ्रू द चैट विंडो। वी कैन डू द नॉर्मल मीटिंग्स ऑल्सो, जिसको हम स्केड्यूलिंग कहते हैं, कि हम ठीक है नॉर्मल स्केड्यूल करते हैं मीटिंग्स को। वी कैन गो फॉर द ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो, राइट। यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन शेयर योर थॉट्स, एंड क्रॉस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। there is a reading progress which is available in Microsoft Teams, so I'm going to show you that part also because that is very beautiful. आप बच्चों के साथ में रीडिंग प्रोग्रेस यूज कर सकते हैं बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द रीडिंग डिफिकल्टी, क्योंकि कभी कभी हम क्लासेस में एक्टिविटीज कराते हैं कि ओके रीड अ पैराग्राफ, बट व्हाइल रीडिंग अ पैराग्राफ यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि कितने बच्चों ने कीवर्ड्स को गलत पढ़ा है, या उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, या स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हुई है क्या। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप एज एन ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली वी कैन नॉट give a report to that particular topic. रीडिंग प्रोग्रेस विल एक्चुअली गिव यू द रिपोर्ट, राइट। वो रिपोर्ट आपको कैसे दिखाई देगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी, राइट। सो आई हैव दैट रिपोर्ट, लेट मी चेक। Okay, till the time it is opening, I'm going to show you quickly whiteboard. Where is my whiteboard? I think, okay, this is my whiteboard. Okay, it is asking me to sign in. No worries. And now you can see I have all the images over here, right? All the whiteboards over here, and you can see multiple whiteboards are available over here. बहुत सारे whiteboards है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 2 महीने पहले क्या पढ़ाया था अपने बच्चों को, तो वो whiteboard भी आपके पास अवेलेबल होगा यहाँ पे, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो देर आर सो मेनी गुड थिंग्स विच आर एक्चुअली अवेलेबल इनसाइड दिस you know inside this whiteboard. Apart from that, okay, so now you can see I have whiteboards. I have added images over here. I can simply click on it and I can show you कि images मैंने यहाँ पे add की थी, right? यहाँ पे आप किस तरह से define कर सकते हैं, brainstorming activities करा सकते हैं, इस तरह से आप draw कर सकते हैं images. You can even if you are teaching mathematics, if you are teaching chemistry, if you are teaching physics, anything, whatever you are teaching, you can simply click on the whiteboard and you can do it. So there are so many things into this, and I'm going to simply click on the plus icon to show you how new whiteboard looks like. And you can simply put the notes. We do have the beautiful notes. You can minimize and maximize size also. You can put the note grids का भी आप color change कर सकते हैं, right? आप इस तरह से कहीं से भी आप
ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको. इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन सिंपली चेंज द कलर from this place. If you want to change a specific color in the node grids you can do so, right? You can simply talk about the activities if you are teaching something related to mathematics, right? So you can draw different diagrams over there. So there are so many things which you can do. You can simply highlight the specific part. You can, you can put the ruler which is available, and you can simply draw a straight line over here. So and then you can simply disable this. We have beautiful things. If you want to disable this inking icon, you can simply click on it. Now we can simply click on the menu bar which is already there. And we can put the images also. Images आप कहाँ से लेना चाहते हैं? Bing images is already inbuilt over here, so you can simply click on Bing images and you can simply write down and you can simply put the images. So let me click on the books images, and if I wanted to select a specific image I can select it and I can download it. अगर आपकी image ये आपकी images अगर आपके device में है you can simply select and give it to your students. You can write down, okay, you can create a project work for your students, you can create a homework for your students. Everything will be available here only, and you can simply drag the canvas and write down again. If you think कि हमारी space भर चुका है हमें और space चाहिए, you can simply drag it like this and you can start writing it again. So these things are available inside this. In fact you can simply click on the share button, and share button पे click करते ही आप उसको share भी कर सकते हैं, right? So these things are really will ease your life actually. So I'm going to close this one now. I'm also going to show you how actually a reading progress will actually um, teach you the different things. So let me see if it okay. Okay, so let me open Microsoft Teams where it is. Yeah. So once you click on Microsoft Teams, so it is opening Microsoft Teams application. And you can see it is opening in the browser mode, right? So अभी browser mode में जब open होता है तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें check करेगा and it will open it for you, right? So I was talking about reading progress. So reading progress is a free tool again. I'm just closing it and I'm sharing my Microsoft Teams, how exactly it looks like, right? I wanted to show you कि आप कैसे Teams का beautifully use कर सकते हैं. So let me click on it and you can see there are so many classes over here. I have created my classes, right? So let's see, अगर मैं किसी particular एक class की बात करती हूँ, let's say class हम 4th में जाते हैं, right? And now here you can see we do have different channels available. ये channels basically क्यों है? So सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो क्लास 4th है आप कैसे बनाना, मतलब आपकी कोई भी क्लास है अगर आप वो कैसे आप बनाना चाहते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं, राइट? उसके अलावा वी डू हैव डिफरेंट ऑप्शंस रिलेटेड टू द क्लास ओनली.
राइट. We can go to the home page, you can check the class notebook. क्लास नोटबुक आपकी बच्चे की क्लास नोटबुक से रिलेटेड होगी वो. हर बच्चे की अलग अलग क्लास नोटबुक होती है. We do have assignment section also. We do have grades, we do have reflect, we do have insights, we do have various options which are available over here. Right. So now the thing is कि हमने general channel is basically meant for the simple communication between students and the teachers. Maths का जो हमने एक channel बनाया है that is only related to the maths. Probably maths teacher can come in and she can work over here. We can go into the science and we can see, okay, there is a meeting which was scheduled already. Right. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने साइंस की मैडम ने साइंस की जो क्लासेस है वो कब किस दिन के लिए स्केड्यूल की हुई है. राइट. आप यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट राइटिंग. ओके. लाइक दिस. राइट. नाउ अगर आपकी टीचर कोई आपका आपके लिए कोई वीडियो इंसर्ट करती है, लेट्स से कि ओके गो थ्रू दिस वीडियो एंड देन कम अप विद द क्वेश्चंस, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. राइट. ताकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन को यूज करके इतनी सारी चीजें कर पा रहे हैं. हमें अलग अलग एप्लीकेशंस में ओपन नहीं करनी पड़ती, हमें जंप नहीं करना पड़ता. राइट. इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू गो टू द फाइल्स मेन्यू, आपका जो फाइल्स का टैब है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. आप अपलोड कर सकते हैं फाइल्स, फोल्डर्स, टेम्पलेट्स, एनीथिंग. आप न्यू पे जाके इतनी सारी चीजें आप बना सकते हैं. इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्विक असाइनमेंट फॉर योर स्टूडेंट्स, यू कैन क्विकली क्रिएट इट फ्रॉम दिस प्लेस. राइट. आप शेयर कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है. नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट टैब्स ऑल्सो. आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं और आपने ऑलरेडी उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं. हमने यहाँ पे एक नोट्स का सेक्शन बनाया है. एक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है. सो प्रोबेबली इट इज अ वीडियो बेसिकली. सो नाउ यू कैन सी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वीडियो इज ऑलरेडी देयर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन द 4th स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने मटेरियल दिया है वो भी आपने स्पेसिफिक टू स्टूडेंट्स दिया है. राइट. स्पेसिफिक टू योर रिक्वायरमेंट की बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को सारी चीजें वहीं के वहीं मिल जाती है. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. सो वी डू हैव ब्यूटीफुल फीचर्स ओवर हियर. Right. So this is how we can use different things. You can save time also with the help of reading progress. We do have insights. अगर मैं insights पे click करती हूँ तो it will show you insights की educators automatically detect करते हैं features को. कितने बच्चों का actually trend दिखाता है. So welcome, it will say you welcome to education insights. Right. It will talk about everything related to the class only. It will track your class progress towards learning and well-being goals. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल इमोशनल वेलबींग के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड है. आप इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक को सपोर्ट करता है ये. सो आज अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की तो देर आर सो मेनी प्रोबेबली वेरियस schools across not only from pan India but of course from all over the globe. They are using Teams. सभी schools इसे यूज कर रहे हैं. राइट. इफेक्टिवली. राइट. एंड यू कैन ऑल्सो गिव सर्विस एज एन एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एडवाइजर. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप आसपास के एरिया में जाके भी लोगों को बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कितना इफेक्टिव है, क्या क्या फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, कितनी फैसिलिटीज के साथ में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है. राइट. आपको कितनी इंसाइट्स के बारे में पता चल रहा है, आपके पास डेटा ऑटोमेटिकली है, आपको सिर्फ क्लिक करना है रिपोर्ट पे, आपको रिपोर्ट्स भी नहीं बनानी है. राइट. सो देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स ओवर हियर. आप बच्चों की रीडिंग स्पीड पे काम कर सकते हैं. राइट. आप उनको बोल सकते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस ओवर टीम्स एंड देन ऑटोमेटिकली दे विल कम टू नो कि क्या क्या स्ट्रगल था जब वो पैसेज को पढ़ रहे थे. सो देर आर वेरियस थिंग्स ओवर हियर इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. Right. And it will actually teach you each and everything. So let me just wanted to show you quickly reading fluency कैसे काम करता है different sections में. Okay, if you are using Teams, you can write your name in the chat window, right? You can write the city or village from where you belongs to. Okay, now what else is there? So let me show you.
Okay, let me stop sharing my screen and let me share it again. Okay, so just a moment. Okay, so I believe my screen is visible to everyone. Okay, ग्रेट। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे रीडिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास में रीडिंग प्रोग्रेस अवेलेबल है, राइट? एंड you can see there are so many teams which are already available, right? You can simply if you want to integrate you can simply click on class। हमने क्लास पे क्लिक किया, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट का सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? आप उस पे असाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज द एरिया वेर इन यू कैन सी एवरीथिंग एज एन टीचर, राइट? यू कैन क्रिएट योर ओन असाइनमेंट ऑल्सो, राइट? असाइनमेंट हम क्लिक करेंगे, हमें असाइनमेंट क्विकली हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से ज्योग्राफी रीडिंग असाइनमेंट, एंड देन वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो टू अवर स्टूडेंट्स की जब आप रीड करेंगे तो क्या क्या चीजें करेंगे। देन सिंपली क्लिक ऑन द रीडिंग प्रोग्रेस बटन which will actually help you to create an assignment for your students। apart from that रीडिंग प्रोग्रेस आपको बताएगा कि आपको कौन सा पैराग्राफ देना है बच्चों को पढ़ने के लिए, राइट? सो यू कैन ईदर इम्पोर्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, और अगर आपके पास में कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास में सैम्पल गैलरीज भी अवेलेबल है, सैम्पल लाइब्रेरी अवेलेबल है जहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन import word or pdf and it will help you to import the document inside your reading progress। So I believe that it will really help you। I'm going to select this one, and then you can also enter the reading level कि किस तरह से reading level होना चाहिए, beginners है, intermediate है। So basically you can give any figure over here, एंड देन प्रोबेबली इट विल आस्क यू कि प्रोनाउंसिएशन सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए जब बच्चे रीड करेंगे उस पैराग्राफ को। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू कैन सर सिंपली मेक इट डिफॉल्ट, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे भी पढ़ेंगे पैराग्राफ को, राइट? एंड देन यू कैन चेक द स्टूडेंट व्यू। वंस यू असाइन अ पैराग्राफ यू कैन चेक द स्टूडेंट व्यू कि बच्चे कैसे व्यू करेंगे, राइट? यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड दे विल they will turn on their camera, they will turn on their mic and they will start reading it now। Okay, now it will show you like this way that recording is going on and they will start the recording। सो यहाँ पे जब बच्चे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे यू कैन सी दिस इज द इमर्सिव रीडर इन्वायरमेंट। हमने कल बात की थी इमर्सिव रीडर इन्वायरमेंट की, जहाँ पे आप टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, और पिक्चर डिक्शनरी के साथ में आप पिक्चर्स देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड अगर आपको पिक्चर देखनी है तो यानी कि इमेज कैसी क्या मीनिंग है उस पर्टिकुलर वर्ड का वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अवेलेबल इनसाइड दिस रीडिंग कोच basically। So this is how students are going to read the paragraph। It will capture each and everything। बच्चे ने अगर कोई स्किप किया है कीवर्ड तो भी वो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें जब हमें रिपोर्ट आएगी, राइट? उसके अलावा हमें यहाँ पे एज एन टीचर व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक एवरीथिंग, right? So there are so many things which you can actually teach to your students। So again you can see how it exactly works, right? um,
अगर आप अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज कर रहे हैं, यू कैन write into the chat window and you can learn more into this particular more about this platform, right? You can write yes, and then you can write your name, your city, your village name. um, Definitely it will help you out. Okay, so let's say once the paragraph is done, you can simply click on I am done, and it will capture each and everything, and it will give you the result. So this is how it actually works. You can simply click on the exit student view, क्योंकि आपका student का view होता है तो definitely student इस पे click करेगा और आपके पास automatically ये चीज submit हो जाएगी, right? You can simply click on the next button and then hmm, and you can see it is this paragraph consists of 126 words, right? And number of attempts is unlimited. जब हमने बच्चों को पैराग्राफ हम देते हैं तो हम उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ में दे सकते हैं ताकि वो n नंबर ऑफ टाइम्स उसको रीड कर सकते हैं. Okay, and then once you assign it, you can, once you check each and everything, you can assign it to all your students. जैसे बच्चों को ये मिलता है, बच्चे आपको सबमिट करेंगे, राइट? उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से रीडिंग प्रोग्रेस विल हेल्प यू आउट टू विद द डिफरेंट कलर्स. अगेन यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे आप एक्टिविटी को और रिपोर्ट्स को बता पा रहे हैं बच्चों को कि यहाँ यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है. नाउ यू नीड टू रीड दीज वर्ड्स प्रॉपरली, राइट? So let me click on the next. And this is how once if anything is there you will get notified. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको ऑटोमेटिकली अगर आपके टीम्स में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो you will get notified also. So this is how it works. Okay, so we can click on view assignments. So in the same way, students also feel confident, you know, कि they can read you, you are helping them as a teacher, कि आप उनको हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है, इन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट? इन चीजों को आपको आपने ये मिस प्रोनाउंस किया था while reading out this word. So I think this activity will help students to focus on the pronunciation skills. वन स्टूडेंट आर गोइंग टू, इट विल ऑल्सो गिव यू इंस्ट्रक्शंस कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको रिपीट करना है कोई वर्ड, या आपने कोई स्किप किया है तो किस तरह से वो रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा. सो आई थिंक इट विल हेल्प यू एज अ टीचर ऑल्सो टू गिव द valuable feedback to your students. And now you can see बच्चों ने जैसे टर्न इन करेंगे you will also get notified as a teacher that they have submitted their assignments, and now you can see that what is the accuracy level, right? Accuracy level of the students, like 70 words per minute थे, 100% accuracy rate था, and यहाँ पे 95% accuracy rate था with few keywords, probably insertions are there, क्योंकि कभी कभी बच्चे पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं वो, तो you can see insertions also, right? So there are so many things into this, and you will be able
able to, as a teacher you will get the report, और as a teacher जब आप ये report बताएंगे students को तो वो ज़्यादा effective होगा कि वो next time और अच्छे तरीके से करे. So I believe that this will really help you and your students, and wherever you are, it will help you out with the community also, कि हम आप community में भी help कर सकते हैं, right? इस तरह से आप अपने business opportunities को और increase कर सकते हैं बता के कि इसमें कितने सारे benefits है जब हम Microsoft Teams का use करते हैं, right? So even many organizations are also using Microsoft Teams for daily, for day-to-day work, because it is quite good. As a teacher you can say that it is mispronounced, you can even manually check also. So these are the things which are available inside this, right? Okay, now what else is there? So let me click on the get started insights. Okay, so this is how you can get the insights for your class also, right? Okay, what else is there? Let me minimize this. There are so many things. We can go to the assignment section. We can see, we can give assignments to our students. We can communicate with them. We can like this. So you can simply click on it. So no upcoming assignments right now. For this particular class, you can go to the files. You can click on the calls. If someone called you, you can go to the chat. You can simply do the communication, one-to-one communication also. So there are so many things over here. Okay, now I can minimize this thing, and there are other things as well. So let me minimize this thing and let me go to our next topic, which is planner. Yes. Okay. Okay. Let me take a pause and let me see if any questions are there. I believe you are enjoying. Yes. And please write your name, city name, village in the chat window so that um, you should know that yes, you are getting the things. So I'm taking pause over here, right? I'll give you some time to think. And meanwhile, you can do this activity. You can go to the yesterday I gave you one link regarding Microsoft Learn. Meanwhile, you do this activity. Go to the learn.microsoft.com, right? Go to the learn.microsoft.com and then select the sign in option. I also need to sign in. So I'm going to sign in into this. Okay. And there is a two-step verification process. So I request all the participants to share their views in the chat window. And this is how this education center is. It will provide you more than 4,000 plus courses. We do have beautiful resources over here.
if you want to create the curriculum, you can refer to this website and you can create your own curriculum for the students also, with the help of different applications which we have already used. So definitely I believe that whatever we are covering today, whatever we have covered yesterday, and whatever we are going to cover tomorrow, definitely it will help you to increase your skills, the business opportunities, and of course you can leverage all these applications also. So and once you scroll it down, you can see we do have immersive reader functionality, so and we do have reading progress also available over here, right? So you can simply click on reading progress and you can see what all things are there. If you are clicking on the immersive reader, you can simply click on it and you can simply go and check what all things are there. So so I just wanted to show you one thing. I have read aloud functionality over here, right? So let's say if I wanted to read this paragraph, right? So how I can do this? I can simply right click on it. I can click on read aloud. Read aloud will basically allow you to. Microsoft's Immersive Reader is a free tool built into Word, OneNote, Outlook, Office Lens, Microsoft Teams, Reading Progress. So can you see? Once I click on read aloud, I can close my eyes and I can listen to this paragraph. So this is amazing feature. All right, if you want to read a lengthy paragraph, you can simply turn on the immersive reader functionality. It is available inside Microsoft Word also, right? And you can simply change the speed. You can minimize, slow down the speed or fast अगर आपको करनी है तो वो कर सकते हैं. You can even change the language which is already there. So we have English language. आप यहाँ से नेचुरल लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है यहाँ पे दी हुई. यहाँ पे इंग्लिश है, फ्रेंच है, इवन हिंदी ऑल्सो इज देयर. अगर मैं कोई हिंदी का डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, इट विल स्टार्ट रीडिंग इट हिंदी. सो लेट मी क्लिक. Progress Phones, Flip, Minecraft Education and the UZ browser that implements proven techniques to So whatever your document is, it is going to read according to that only, right? So let me open any Hindi document. Let me, I will ask moderator to get me some document in Hindi so that, I can show you how immersive reader actually works. So I just wanted to show you how beautiful it is. So let me go to the English, and if you want to try it out, ये आपके पास भी फीचर अवेलेबल है. आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, एज ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए, वहां पे रीड अलाउड फंक्शनैलिटी है, राइट? आप अभी तो मैंने यहाँ पे आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज इन इंग्लिश ओनली. सो वेयर इज इंग्लिश? लेट मी चेक. इंग्लिश इंडिया आई हैव, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट निर्जा ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट प्रभात ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ. Improve reading and writing for people regardless of their age or ability. Browse all training. Building a foundation for future success. सो Use success. आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये, राइट? अगर आपको धीरे धीरे पढ़ना है तो भी आप यहाँ पे जाके स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं, और अपना कर्सर अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो अगेन आई कैन स्टार्ट प्ले बटन. Inclusive Okay. education tools give more students personalized access to their curriculum, optimize teacher time, and improve learning outcomes. So now you see how. What does it do? Okay, so I need to pause. So it is a beautiful functionality. I request all the participants who have joined today, please do this activity. Open any browser, right? If you have Edge browser, it is good. You can open any browser. You can open any something which you wanted to read, and just right click on it and you have the read aloud functionality. So let me close this option first of all. Okay, it's just right click on it and you have this read aloud functionality, right? So I want you to read by your own. You can simply use this functionality. So I'll take a 2 minutes of pause over here, and we can quickly reconnect once again. You do this activity.
Okay, so I believe that you have already done this activity. Okay, so let me minimize all these things. Let me okay, what else is there? I think we have three more of things which are so let me share my screen once again with all of you. Okay, yeah. Um, I okay. I'm also going to share how a person will work with Microsoft Teams, right? How a person spends his day. So let me share my screen quickly with all of you. And now we can see, okay, so I don't, okay. So now what is a planner? So first of all, I'm going to quickly cover the planner also. What is a planner? How to create it? How to navigate it? How to add the boards into the task? So basically planner is a place wherein you can, you can streamline your work. You can, so in the simplest terminology, if I wanted to explain what exactly planner is, so planner is an application through which you can give tasks to your team member. The moment you give tasks to your team member or the moment you assign a task to your team member, they will get a notification, right? They will get a notification that they have received some task and they have to complete it. This is the deadline. These are the documents related to the work, and once they are going to start the work, and if the work is already is in progress, you will get a notification, right? And once they finish the work and they update it onto this portal, this bucket, right, you will as a manager you will get the notification that they have completed the work. So this is how it is beautiful application through which you need not to do the follow-ups, you need not to make calls. You can simply create buckets and you can do your work. So this is very simple. So you can create your plan, you can organize, you can assign tasks, you can even share files, you can even do the chat also. And so basically ये आपके काम को ना बहुत ही इजी बना देता है। आपको बार-बार किसी को के साथ में फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कितना काम हुआ, बिकॉज़ ऑटोमैटिकली इट विल बी देयर ऑन द बोर्ड ओनली। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। आपके पास सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के शेड्यूल है, कितना टाइम कितना कंप्लीट हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। वी डू हैव बिज़नेस प्लान, वी कैन क्रिएट बिज़नेस प्लान, इवन एम्प्लॉइज़ ऑनबोर्डिंग प्लान इज़ आल्सो अवेलेबल। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, आपका लेसन प्लान वाला काम प्लान है, यू कैन आल्सो डू दैट आल्सो कि आपने स्टूडेंट्स के साथ में कैसे-कैसे चैप्टर्स फिनिश करने हैं। So if you are giving activities to your students, that also is possible through Microsoft Planner. So it is a beautiful tool. Now what else we have? We can create beautiful dashboards using Power BI. Can you see अगर हमारे पास में 10,000 रोज है और हमें उन 10,000 रोज को इफेक्टिवली यूज करके हमें डेटाबेस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, राइट? डेटाबेस तो बन जाएगा एक्सेल में या किसी और पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, बट हम उसको डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, दिस इज द हेडलाइन विच इज गिवन, राइट? आप इस सेलेक्ट ईयर कर सकते हैं यहाँ से 2012 की कोई भी डेट सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि क्या उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, क्या सेल्स के ट्रेंड्स थे, राइट? हाउ मच यूनिट्स सेल by the segment, how much we are selling by region. So everything is you can see through the help of the Power BI. So Power BI is basically a visualization tool. Visualize your data. Again I'm repeating कि जब पिक्चर्स होती है सामने तो चीजें जल्दी समझ में आती है, राइट? अगर आप मुझे कोई इमेज देंगे या अगर अगर हम लेट्स से मैच की बात करते हैं, तो अगर हमें मैच के फिगर्स हमारे सामने होंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा
राइट अगर हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो है या छोटा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट है तो हमें चीजें जल्दी समझ में आती है सो दिस इज हाउ दिस पावर बीआई इज रियली वेरी हेल्पफुल यू कैन फेच योर डेटा फ्रॉम एनी डेटाबेस आपका डेटाबेस फिर वो एसक्यूएल सर्वर हो चाहे वो ओरेकल हो या फिर चाहे आपका एक्सेल फाइल हो आपका सीएसवी फाइल हो आप किसी भी डेटा को फेच कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स को बनाने के लिए एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल राइट यू कैन सिंपली click on it and you will get it so I have one data if time permits me I will definitely show you now what else we do have we have this beautiful Microsoft forms you can see the beautiful images are also there on the screen right and we can do this activity today quickly right how it will give you the real time data आप real time data के साथ में कैसे काम कर सकते हैं right how to collect data into the real time if you are working with Microsoft Forms. So I am going to show you that. Now the best part is you can share it also. Now can you see these options are already there like you can anyone can respond. So let's say मुझे अगर data collect करना है right और मुझे anonymously data collect करना है I don't want to know कि मेरा user कहाँ पे है तो मैं क्या करूंगी उस केस में मैं एक फॉर्म बनाऊंगी and I can simply spread the link everywhere so anyone can open that link and anyone can fill the form okay now another thing is I can do it within the organization also ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही भरे और क्यों अगेन जब मैं लिंक शेयर करूंगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होंगे उनको साइन इन करने के लिए वो ऑटोमेटिकली पूछेगा और उनको साइन इन करने के बाद में वो फॉर्म भर पाएंगे राइट देयर इज नो लिमिटेशन बेसिकली anyone can respond even you can collect 10,000 of data also into this you can even share it via outlook you can share it via teams also हम teams के through भी इसको circulate कर सकते हैं so you can even share it via link you can share it via via outlook or teams you can share it via QR code और अगर आपका कोई blog है आपकी कोई website है जहाँ पे आप अपनी link देना चाहते हैं और आप चाहते हैं वहाँ पे click करते ही user response कर दे आपके सामने कोई फॉर्म आता है और वो आप सबमिट कर दे उस फॉर्म को एक हो सकता है कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो लेट्स से इफ यू वांट टू रजिस्टर योर स्टूडेंट्स फॉर सम समर कैंप प्रोग्राम्स और anything they can simply open the form and they can fill it and you have the data right so this is how it is so let me see what else is there ओके बेस्ट पार्ट इज जब आप फॉर्म बनाते हैं तो लेट्स से नाउ यू कैन सी देयर इज वन क्वेश्चन लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग एक्शन स्ट्रिंग सेक्शन सो आप इन ऐसे इमेजेस भी दे सकते हैं ताकि यूजर को जल्दी से जल्दी समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन गिटार कैसे दिखता है या फिर सैक्सोफोन कैसे दिखता है राइट अगर हमें इमेजेस सामने आती है तो हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उस चीज को एंड images as answers to the poll questions you can create polls also in the teams channels आप पोस्ट बना सकते हैं चैनल्स में आप क्विजेस कर सकते हैं आप सर्वे क्रिएट कर सकते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू दिस okay now we can go and definitely we can do this redeem code wala option also I will ask moderator to share the code with you now I would like to jump into the demonstration part quickly right and you can follow us you can tweet us through Twitter about your learnings yeah so I'm just clicking on the end show that's it and I'm going to show you the yeah I think it is there yeah so let me show you Power Microsoft Forms, how it exactly works, how we can collect the data in real time, because that is also very, very important, right? So let me, okay. Okay, so now here you can see there are so many options available. You can simply click here and you can go to the new form.
Okay, now the best part is AI is integrated into this, and अगर यहाँ पे लिखते हैं आप, let's say okay, let's say summer camp, yeah, 23, और जैसे ही आप यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कुछ भी। आप चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं, राइट। आप रेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप डेट बेस्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हाउ कुड द ट्रेनिंग improved your life, right? So this is a text box. I can simply select it. How likely are you to recommend this training to your friend and colleague? It is a checkbox, right? It is not a checkbox, it is simply radio button. How likely are you to attend one of other training workshops in the future? So these kind of questions, it will automatically give you, it will automatically recommend you this. It is very intelligent कि आपको automatically questions बताता है। अगर आपके पास में questions है, you can definitely write down those questions, but if you want you can simply so I'm just going to add all those questions and see how it looks like. Add selected, that's it, and it will look like this. You need not to do anything, automatically everything is there, राइट। सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। आपको सिंपल स्टाइल चूज करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, और स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टाइल आपको अच्छी लग रही है। वेदर यू वांट टू गिव लाइक दिस, कि इस तरह से जब यूजर ओपन करे तो इस तरह से आपको दिखाई दे, राइट। एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग दिस, एंड नाउ आई वांट टू शेयर इट, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस है जो आप देख सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। Now I wanted to share it. So मैं एक बार प्रीव्यू देख लेती हूँ कैसे दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देगा। Immersive reader is also there. You can turn on the immersive reader and it will read out the content for you. ये मोबाइल में भी अवेलेबल है, right? So it is very good. Summer Camp 23. See, Summer Camp 23. in fact, we do have translation feature also. You can simply click here. You can go and you can choose Bangla and change document, and I'm just going to read out. গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প 2-3 Now you can see it is, গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প 2-3 so it is beautiful. The translation feature is not changing your form. Your form will be in English only, right? You can even check in the mobile view also कि mobile में कैसे visible होगा. So it is quite simple. So I can go back. I can quickly share it with all of you. I can check I have already checked the preview. I can click here. Okay, I can collect the responses, and I can, and if I'm going to use this, you need to sign in. So I'm going to click on the anyone can respond, and I can, copy the link, or I can simply shorten the link क्योंकि shorten से छोटी हो जाएगी आपकी link. I can copy the link and I can give it to you in the chat window. So if you really want to try, you can, and I will show you कि कैसे मुझे responses यहाँ पे visible है. So I'll ask moderator to quickly paste this link into the chat window, and I'll show you the responses are there. So you can see responses are 0. My questions are like this. Let me enter one more question over here. So it will be like a name, right? Enter. Okay, I'm just doing the editing. Enter your name and location like this. That's it. Yeah, and the preview is already there. So if you have received the link, you can try it out. You can simply click on the start now and you will see the responses. Now I just wanted to show you the responses also. Now you can see there is no response right now, right? Probably you are opening it, you are writing down the, you are filling out the form, and as soon as you click on the submit button, you will get, I will get a notification over here, and you can see one response is there. Wow, wonderful. That's very quick. So I can simply click on the view results and I can see the result also quickly over here like this way. Yeah. Okay. Now very important part is these questions are mandatory. It is not there, right, in the questions. So now I can go back and I can, I can, no, I can go back. I can simply click on it and I can, make it as an mandatory. If you want to make this mandatory question, then definitely you need to simply click on the required like this, right? Once you click on the required, it is mandatory, and now you
won't leave this message. So again, I'm going to show you how many responses I have received, and you can see I have the responses over here, and it is wonderful, right? मुझे क्विकली रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा कि मुझे कल तक रिस्पॉन्सेज आएंगे और फिर मुझे काम करना होगा, राइट? सो आप इस तरह से कोई भी अगर किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्विकली फॉर्म बना के स्प्रेड कर दीजिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्सेज, right? And responses are real time responses. I just wanted to share one scenario with all of you. I was in a university, right, wherein people are standing for filling out the form, and it was a very long queue. So मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे उनको forms के बारे में बताना चाहिए और उनको बताना चाहिए what is the usage of it, right? Why people are standing, why students are standing just to fill the form. So I have just guided them कि ठीक है, आप इस तरह से form बना लीजिए and you can simply circulate through the QR code. आप QR code के 4-5 प्रिंट आउट्स लगा दीजिए इधर उधर, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट स्कैन कर लेंगे, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग स्मार्ट डिवाइसेस. सो बच्चों ने यही किया, क्विकली उन्होंने स्कैन किए एंड दे आर वेरी हैप्पी. उनको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा, उनको क्विकली दे जस्ट क्लिक द पिक्चर, दे स्कैन द QR कोड एंड उन्होंने क्विकली फॉर्म फिल कर दिया विदाउट स्टैंडिंग इन अ लाइन. सो आई थिंक this gives you, I think this will ease your life, because it is great form. I think business opportunities बहुत ज्यादा increase होती है इससे, because हम ऐसे applications को use कर रहे हैं जिससे हम अपना काम मिनिमाइज करके हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को. सो आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू. एंड अगेन you can import the data into Excel, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर आपको फॉर्म्स आप कलेक्ट करते हैं तो यू आर कलेक्टिंग द फॉर्म्स, फिर आपको फॉर्म्स एंटर करने पड़ते हैं एक्सेल में, राइट? दीज थिंग्स आर देयर. एंड नाउ मोर ओवर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल ओपन इन एक्सेल करेंगे, आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे होगा. राइट नाउ यू कैन सी these are the options which I'm getting a word cloud over here, right? And this is word cloud. And अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे है, अगर आप टीचर है, अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि ओके इतना डेटा आ चुका है, या बच्चे यहाँ पे पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं, या ये समर कैंप की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो यू हैव दिस काइंड ऑफ डेटा ऑल्सो. कैन यू सी दिस डेटा? Huh? So you can see, okay, 4% are saying, okay, very good, right? Like this. So this kind of images are also there. You need not to create any kind of charts while while collecting the data. And the best part is there is one great thing. You can simply present the data to your team, right? आप देख सकते हैं इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को कि हाउ कुड द ट्रेनिंग और वर्कशॉप हैज इम्प्रूव्ड, एंड पीपल आर टाइपिंग इन, एंड यू कैन सी different options are coming in as in word cloud. There are so many words over here. You can simply click on the next, and it is popping out like this. And let me go back and let me see. Okay, I have just saw one word, Nagapattinam. So I had visited Nagapattinam, right? And it was a great tour. I went to Amrita Vidyalayam to deliver the workshop. So I think it was great time I spent there with the teachers over there. So you can see, you can quickly showcase this kind of this kind of presentation to anyone कि इतनी सारी चीजें हैं जो हम क्विकली दिखा सकते हैं, हमें मैनुअली नहीं बनानी पड़ती है सारी चीजें, हम क्विकली दिखा सकते हैं चीजों को. सो इट इज ब्यूटीफुल, एंड यू आर गेटिंग द रियल टाइम डेटा. आपको कहीं पर भी किसी चीज के लिए भी वेट नहीं करना पड़ रहा. सो आई बिलीव कि आप जब भी रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट द पेपर्स टू योर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू गिव द फॉर्म लाइक दिस वे, राइट? So this is how the form actually works. And in fact मुझे लगता है हमने कल भी एक क्विज शेयर किया था आपके साथ में, जहाँ पे you will get the marks also. तो basically यहाँ पे दो चीजें हैं. Let me go back. Okay, let me go back and let me show you. You can simply click on the forms, right? And you can let me open the page quickly. ओके, यू कैन क्रिएट अ क्विज ऑल्सो. और जब आप क्विज बनाते हैं ना, तो आप क्विज बनाते वक्त आपके सामने रिजल्ट भी आ जाता है. सो लेट मी सी, अगर कोई क्विज है मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ तो लेट मी क्लिक ऑन शो मोर.
I have quizzes. Okay, day 5 quiz. Let me open this. I don't know what it is. I can open day 3 quiz. ठीक है, एक बार मैं ओपन करके देखती हूँ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है. Okay, wow, wonderful. Superb. There are questions. Okay. So there are questions. Wow. So which shortcut key is used to start slideshow in PowerPoint? Right? 2 points. So, and these questions are mandatory, right? So if you are going to click and once you click on the submit button, you will be able to see your marks also. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे. और अच्छा, यहाँ पे जब आप क्विज बनाते हैं ना तो आप बच्चों को टाइम भी दे सकते हैं कि बच्चों आपके पास में 5 मिनट्स का टाइम है, लाइक एड अ टाइमर टू द क्विजेस. सो यू कैन नाउ सेट अ quiz timer that is customizable to fit your needs. Try it now. So I'm just click on the button and see preview कैसे दिखता है ये. अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ओके 30 मिनट्स. ओ माय गॉड. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन यू कैन डेफिनेटली मिनिमाइज द टाइमिंग्स आल्सो डेफिनेटली. एंड मोर ओवर आप एक थैंक यू मैसेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं जब भी आपके पास में आप किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं. यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज. यू कैन गो टू द सेटिंग्स पार्ट एंड यू कैन से थैंक यू मैसेज. यू कैन कस्टमाइज थैंक यू मैसेज आपका यहाँ पे है. योर आंसर्स हैव बीन सक्सेसफुली submitted or thank you so much for participating into this program. And there are wonderful messages you can give it to the users. So this is how it is. And I love this entire Office 365 suite of applications because I believe that this will really help me and my colleagues to increase their productivity. बहुत ही कम टाइम में वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और फटाफट काम करके दे देते हैं मुझे, राइट. एंड आई बिलीव दैट इट विल रियली हेल्प यू ऑल्सो. दिस वर्कशॉप इज गिविंग यू an overview of these applications कि कैसे काम होता है इन applications में, क्या क्या benefits है इन applications के, कितनी जल्दी आप चीजें कर पाएंगे. जिस काम के लिए आपको 8 घंटे लगते हैं हो सकता है वो आप 1 घंटे में कर ले, right? So there are so many good things. And I wanted to share one more thing. इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ वो चीज, I just wanted to share how a person can can spend a day. So let me go to my. Okay, so this is a day in the life for the marketing people. So I have this example with me, right? If you are using Microsoft Teams, okay, I think it is visible to everyone now. Now, see, if you are from the marketing team, you can meet Pam, a marketing professional who uses Microsoft Teams to collaborate, create, and be more productive all day long. So he started his day at 7:45 a.m. by checking the activity feed. Activity feed is actually the notification कि वो जो मैंने आपको बताया था कि Teams में notifications आ जाते हैं, right? And then 8:30 while commuting, while he was traveling, he uses Microsoft Teams through his smartphone, right? And to join the daily status meeting. आप कम्यूट टाइम भी अपना सेव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कभी कभी हमें ट्रैवल टाइम इतना होता है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते. बट इफ यू आर हैविंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यू कैन यूटिलाइज, यू कैन कनेक्ट विद योर टीम मेंबर्स, यू कैन डू चैट, यू कैन आस्क देम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर वर्क, राइट? 9:30 a.m. once she reaches office, she can check the latest product launch deck जो आपकी पावर पॉइंट है. अगर आपके टीम मेंबर्स को एडिटिंग करनी है पावर पॉइंट में, they can do the editing also quickly. 10:30 they can they can collaborate with the team on OneDrive, which is linked with the Excel sheet. So you can see how quickly they are completing their work. 11:45 they may have some kind of channels which is created inside Microsoft Teams, wherein they are actually talking about, they are discussing, they are probably planning something. They can creating some drafts also, right? At 12 they are going to add Adobe Creative Cloud links to the creative channels, so that people can work with that. At 1 p.m. they are going to double book, they are going to use the OneNote to take the meeting notes जो हमने कल डिस्कस किया था, राइट? 1:45 they can consume latest Twitter news is into the channel, connect Twitter with Microsoft Teams. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप
इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। 3 PM दे आर गोइंग टू चेक द प्लानर कि प्लानर में कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, कोई ड्यू डेट तो नहीं है, कितने असाइन टास्क हुए थे। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि हम असाइन कर सकते हैं टास्क, हम ड्यू डेट के साथ में कर सकते हैं। वंस द task is completed, you will get a notification also, right? You can also check what is the upcoming event which is there. At 4 PM you can, go to the uses the stream tab, you can check the videos, whatever the videos are uploaded over there. You can at 4:30 you can go to the social media channel and you can check other things like the latest engagement reports. And of course after 6 PM you will be able to, after dinner you can look at all the conversations and files which is related to the event in preparation for the tomorrow's executive status meeting. And this is how you can, complete your day. So I believe that with the help of Microsoft Teams, with the help of other applications, you can, you can really enjoy your work. So let me take a pause again here. I have a beautiful day in the life for different people, right? Probably I can share it with you. Probably I can create a OneDrive location wherein I'm going to put all the stuff for you, and probably at the end of the day we are going to share that stuff with you. So it will help you really. Okay, let me close this one. Okay, great. So now, if you have any questions, feel free to ask your queries. If you want to share something, you are allowed to share through the chat window, right? And you can connect with us through social media. We are available on Twitter. We are available on LinkedIn. We are available on, different areas. So definitely you can connect with us. And if you want to know more about it, about the applications, definitely we are there to help you out, because हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन एप्लीकेशंस को यूज करें, लोगों को बताएं कि कितनी इफेक्टिव है ये एप्लीकेशंस, राइट? और कितने ब्यूटीफुली इन एप्लीकेशंस का यूसेज किया जा सकता है अपने काम को फिनिश करने के लिए। सो आई बिलीव दैट आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का सेशन, एंड डू शेयर योर कमेंट्स इन द chat window. If you are able to share your reactions, you are feel free to share your reactions also, your gestures. कल मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था emojis को शेयर करने का. I hope if you remember, that is Windows plus dot from the keyboard, and you will be able to get all the characters on the screen, all the emojis on the screen. So you can definitely share that also with me. And I am also going to open a Word document so that I can share. I'm going to show you how it looks like. Those who are attending today, I have discussed yesterday this part, that if this is the, you can see, I think it is, yeah. Okay, let me close this one. Let me minimize this one. Let me go here. Okay, I hope it works here. Yeah. So I am going to use this one. We have so many over here. So like this, you can share. Yeah. So thank you very much. Thank you all of you. And oops. So you can always use Windows and dot to share your gestures. Yeah. And if you want to announce anything, if you want to share your thoughts, you can definitely share it. You can email us also. Yeah. So thank you all the participants who have joined in today, and आपने समय निकाल के ये workshop की.
राइट। आई बिलीव दैट आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के वर्कशॉप से। बहुत ज़्यादा टूल्स हमने डिस्कस किए आज। हमने व्हाइट बोर्ड यूज़ किया, हमने हमने प्लानर को देखा किस तरह से इफेक्टिवली टास्क मैनेजमेंट किया जा सकता है प्लानर के थ्रू। हमने देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूसेज हो सकता है, राइट। और बाकी के भी काफ़ी टूल्स हमने यूज़ किए थे। हमने वन ड्राइव का यूसेज किया था बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड हम पावर बीआई के थ्रू डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। यू कैन क्विकली टर्न योर डेटा इनटू द इमीडिएट इम्पैक्ट। वो चीज आप कर सकते हैं। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, अगर आपके पास स्टूडेंट का रिपोर्ट एक्सेल फाइल में है, आप उसकी परफॉर्मेंस के रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट। आप कस्टमर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक पे काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं, राइट। अगर आपके पास में लेट्स से क्रेडिट कार्ड्स है एंड इफ यू वांट टू सी क्रेडिट कार्ड की कितनी सेल हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज करके कितने लोगों ने फूड आइटम परचेज किया है, and there are beautiful things which you can take out with the help of excel, with the help of power bi, with the help of dashboard. So definitely I believe that you have learned a lot in today's session, and I met your expectations. Yeah. And you can definitely put the feedback in the chat window. We have already shared two links. One is the feedback link and another one is the redeem code link. You just need to click on that link to redeem the code for today's session and you will get a certificate also, right. For that you just need to click on, I'm just writing down here, you just need to log in into the learn.microsoft.com, and once you sign in, you need to click on the link. Click on the link to redeem. Yeah. Okay. So we have already shared two links. The one is to redeem the code. I'm going to show you how you will get the certificates, but you just need to click on that link and it will be redeemed once. But the condition is you need to sign in onto the learn.microsoft.com. And another thing is there is one feedback link. Yeah. So thank you very much for joining in today's session, and all the best to everyone. So tomorrow again, we are going to join at 3 o'clock. Tomorrow's session will start at okay. Tomorrow is 2nd of June. Yeah, 2023. So कल हम 3 बजे मिलते हैं दोबारा आपके साथ में, और हम और एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे, उनका यूसेज देखेंगे, एंड देन you can come up with your questions. Okay. So thank you very much again to all of you, to all the participants. Thank you.